Good morning, students. So, yesterday we discussed question number 1 to question number 5, and you asked your queries as well, and I resolved them. So, let's begin this lecture from question number 6 and try to solve till question number 11. So, learning outcome for today's students. You'll be able to solve question 6 to question 11 of exercise 1.1 by using previous concepts, okay? So this is your learning outcome, that you have to learn this much in mathematics today. So let's begin. These are the questions. Question 6 is multiply 6 by 13 by a reciprocal of minus 7 by 16. 7. Tell what property allows you to compute this. 8th question is 8 by 9 the multiplicative inverse of minus 1 by 1 upon 8. Why or why not? So we have to use, see here we have to revise the properties, and here the reciprocal concept. Here again multiplicative inverse or reciprocal concept. As 0.3 is the multiplicative inverse of 3 is to 1 by 3. Why or why not? Again multiplicative inverse concept. So as I earlier discussed with you students, multiplicative inverse is very important. And in 10th question, 11th questions, there are statements and you have to answer them separately. So in this lecture, I'll discuss each and every question with you with elaborate explanation. Okay, so let's begin. Question 6. In question 6, you have to multiply 6 by 13 by the reciprocal of minus 7 by 16. 6 by 13 को मल्टीप्लाई करना है रेसिप्रोकल ऑफ माइनस 7 बाई 16. सबसे पहले आप रेसिप्रोकल ऑफ माइनस 7 बाई 16 क्या होगा, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है. क्या होगा रेसिप्रोकल ऑफ माइनस 7 अपॉन 16? रेसिप्रोकल implies that multiplicative inverse. So multiplicative inverse of minus 7 upon 16 will be 16 upon 7 minus 16 upon 7. This is your multiplicative inverse or reciprocal of minus 16 upon minus 7 upon 0. Reciprocal means inverse, उल्टा. हिंदी में मेरा नॉर्मल लैंग्वेज, लेमन लैंग्वेज में बोले रेसिप्रोकल का मतलब होता है रिवर्स या फिर उल्टा. तो यहाँ पे सोल्यूशन देखें, 6 by 13 को मल्टीप्लाई करना है रेसिप्रोकल ऑफ minus 7 by 16. You have to multiply this with this 6 by 13 into reciprocal of minus 7 upon 16. So here 6 by 13 into reciprocal of minus 7 upon 16. As I discussed earlier, this is the reciprocal. So you can write it down minus 16 upon 7. Now multiplication करते हैं तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है. तो 6 into 16 it will be 96 and 13 into 7 it will be 91. So this is your answer, minus 96 upon 91. So it's an easy question, but it used to come in the exams. Okay, so let's move to question number. Here you have to solve. Whenever question, just read the question and just think what is required in the question. Don't try to solve, if it's not required. Here the question is, tell what property allows you to compute this. You have to tell what property, only you have to tell property. You didn't have to solve it out, okay? You didn't have to solve it out. You just have to tell about which property you can use to solve this question. Here if you see, it's A into the bracket B into C. See, so
Suppose this is A, this is B, and this is C. Then if A into B into C is written as, see here, A into B is written as A into B into C. This property, what is the name of this property? A into B into C is equal to A into B, then into C. This is associative property of multiplication. So which property allows you to compute this? Associative property. Just you have to write down associative property, and if you want to write further, you just can write this, but don't try to calculate this. Okay, so this is your question number 7. Let's move to question number 8. Question number 8. Question number 8 is that, is 8 by 9 the multiplicative inverse of minus 1 is to 1 upon 8? Why or why not? See, आपको बताना है कि 8 by 9 क्या minus 1 is to 1 upon 8 multiplicative inverse है 8 upon 9 का. तो सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन से इसको नॉर्मल सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 8 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, और जो आता है उसको हम 1 में ऐड कर देते हैं. ओके, सो 8 1 जा 8 एंड 8 एंड प्लस 1 कितना हो जाएगा 9. तो इट विल बी माइनस 9 अपॉन 8. ठीक है, इसका सिंपल फ्रैक्शन ये हो जाएगा. अब आपको बताना है कि क्या ये माइनस 9 बाई 8 बाई 9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है. देखो, हमने पहले डिस्कस किया था, if any rational number is multiplicative inverse of another rational number, then the product of both should be 1. Means this number and this number sorry, if you multiply these two numbers, then the reciprocal must be 1, otherwise they are not the multiplicative inverse of each other. So let's just multiply them. So 8 by 9, and this is minus 1 is to 1 by 8, this one. So 8 by 9, and इसको हम कैसे लिख सकते हैं, minus 9 upon 8. देखो अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, see this. So 8 by 9 into minus 9 by 8. अब जब इसको सॉल्व करेंगे आप, इससे ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एंड इससे ये. इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा -1. क्या ये -1 1 के इक्वल टू है? नहीं, बिल्कुल नहीं. -1 डज नॉट इक्वल टू 1. दिस इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस, और -1 is to 1 by 8 is not the multiplicative inverse of 8 by 9. So ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है, आप इसको एग्जाम के लिए कंसिडर कर सकते हैं. क्वेश्चन 9, सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न. इज 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 is to 1 by 3. आपको बताना है, तो सबसे पहले 3 is to 1 by 3 को हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में. जस्ट कन्वर्ट इट एज एन फ्रैक्शन. 3 is to 1 by 3 कितना, यहाँ देखो, 3 is to 3 जा 9. इन दोनों को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, एंड जो आता है उसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं. सो 3 जा 9 एंड प्लस 1 10 अपॉन 3 आ गया. नाउ 0.3 को फ्रैक्शन फॉर्म में अगर हम लिखे, रेशनल नंबर फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 अपॉन 10, राइट. यू कैन राइट इट डाउन लाइक 3.10. तो यहाँ पे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया. नाउ 0.3 इंटू 10 अपॉन 3, इसको हम 10 अपॉन 3 लिख सकते हैं. Now 0.3 को आप 3 upon 10 लिख सकते हो, as I discussed earlier. तो 3 upon 10 into 10 upon 3. Now 3 से 3 कैंसिल हो गया, and 10 से 10 कैंसिल हो गया, आपका 1 बचा. So here the product is 1, and as I discussed earlier in the question, that if product of two rational number is 1, then both are multiplicative inverse of each other. So the product is here 1, hence 0.3 is the multiplicative inverse of 3 is to 1 by 3.
एक बार मैं फिर इसको समझा देती हूँ। यहाँ पे 0.3 है एंड 3:1/3 है। आपको बताना है कि क्या 3:1/3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 0:0.3। तो सबसे पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। 3:1/3 को हम 10/3 लिख सकते हैं। अब जब 10/3 लिख लिया, नाउ 0.3 इंटू 3:1/3। अब 0.3 को रेशनल नंबर फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम लिख लेंगे 3/10। सो 0.3 को लिख दिया 3/10 एंड सी इसको हमने लिख दिया 3/10 एंड इसको लिख दिया 10/3। ठीक है, अब इन दोनों को सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करके हम फाइंड आउट करते हैं, आंसर आ जाता है 1। और जब 1 आ गया इसका मतलब कि दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इजी सा है, बस थोड़ा सा देखने में मुश्किल लग रहा है बट क्वेश्चन इजी है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन है। 1 मार्क का इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है बिकॉज ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी चेक करते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, वो कौन सा रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है? देखिए, 0 एक ऐसा रेशनल नंबर है, 0 एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। देखो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/1। 2 का क्या होगा? 1/2। ओके, उसका उस फ्रैक्शन में आ रहा है। बट 0 का क्या रेसिप्रोकल 1/0 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज 1/0 आपका नॉट डिफाइंड होता है। 1/0 आपका नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए 0 का कोई भी है ना नॉट डिफाइंड। So 0 is a rational number which has no reciprocal. क्यों? क्योंकि इसका रेसिप्रोकल 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। Second question, the rational number that are equal to their reciprocals, that are equal to their reciprocals. हमने क्वेश्चंस में भी अभी सॉल्व किया था। आपको जो -1 का रेसिप्रोकल निकालना था, तो आपने -1 का रेसिप्रोकल निकाला था 1/-1। जब 1/-1 को सॉल्व करेंगे तो अगेन -1 ही आ जाएगा। सो -1 का रेसिप्रोकल क्या है? -1। -1 का रेसिप्रोकल -1 है। सिमिलरली 1 का रेसिप्रोकल भी 1 होता है। सो दीज टू आर द नंबर्स जिनका रेसिप्रोकल उनके इक्वल होता है। द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। देखो 0 + 0 एंड -0 दोनों की वैल्यू सेम होती है। 0 is the rational number that is equal to its negative. Okay, ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है। एक बार इसको फिर से डिस्कस करते हैं। आप मुझे बताइए, रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, yes 0. The rational number that are equal to their reciprocal, the rational number that are equal to their reciprocals, yes 1 and -1. The rational number that is equal to its negative, yes 0. 0 is the rational number that is equal to its negative. Let's move to next question. Question number 11. अब fill in the blanks है। Now अभी आपने 10th क्वेश्चन में हमने कुछ डिस्कस किया है ना, उसको यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। इसका आंसर प्रोवाइड करने से पहले मैं चाहूंगी आप लोग खुद इसका आंसर देने की कोशिश करें। 0 has how many reciprocals? 1, 2, 3, 4 or none? No, none. It has no reciprocal. क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था 0 का रेसिप्रोकल अगर होगा तो ये होगा 1/0 एंड 1/0 हमारा नॉट डिफाइंड। दिस इज नॉट डिफाइंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर एंड आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, दो नंबर्स ऐसे थे जो खुद के ही रेसिप्रोकल्स थे।
try to answer. Yes, 1 and -1 are their own reciprocals. The reciprocal of -1 -5 is reciprocal of -5 is, it's very easy, -1/5. Reciprocal of 1/x where x does not equal to 0. Reciprocal of 1/x where x does not equal to 0. आपको 1/x का रेसिप्रोकल बताना है. So 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा? x. The product of two rational number is always, ये आप लोग प्रूफ करके देखेंगे. The reciprocal of positive rational number, ये भी आप अभी प्रूफ करेंगे. ओके, आप ऐसा करें कि दो रेशनल नंबर ले लें, उनको मल्टीप्लाई करें, फिर देखिए कि रेशनल क्या आता है, मतलब आंसर क्या आता है. क्या वो इंटीजर हो जाता है या होल नंबर हो जाता है, रेशनल नंबर ही रहता है. एंड दो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स को लें, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर लें और उसका रेसिप्रोकल निकालें और फाइंड आउट करें कि क्या वो पॉजिटिव रेशनल नंबर ही रहता है या नेगेटिव हो जाता है. ओके, सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 11 का. 0 हैज नो रेसिप्रोकल. द नंबर 1 and -1 are their own reciprocals. The reciprocal of -5 is 1/-1/5. Reciprocal of 1/x is -6. The product of two rational number is always a rational number. आप इसको मल्टीप्लाई करके देखना. And the reciprocal of a positive rational number is a negative rational number. Okay, so that's it. इस क्वेश्चन के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.1 फिनिश होती है बच्चों. नेक्स्ट लेसन में मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करूंगी. अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है तो प्लीज मुझे पर्सनली मैसेज करें या फिर कमेंट सेक्शन में यू कैन आस्क दोस क्वेरीज फ्रॉम मी. अदर देन दैट, स्टे हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड. अच्छा हाँ, एक और टास्क है आज आप लोगों के लिए. आप शकुंतला देवी के बारे में पढ़ेंगे एंड मुझे मैसेज करके बताएंगे कि शकुंतला देवी कौन थी और वो क्यों आपको मैथ्स की क्लास में उनके बारे में पढ़ने के लिए कहा गया है. ये आप लोगों का टास्क है. आप इनके बारे में ज़रूर पढ़ें और इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी नोटबुक में भी इनके बारे में लिखें. एक शॉर्ट नोट टाइप लिखें आप शकुंतला देवी के बारे में और मेरे साथ बाद में शेयर भी करें. थैंक यू बच्चों. हैव अ नाइस डे.